Assalamu alaikum. Thank you everybody for joining this session. My name is Samia and I'll be hosting this session of today's UGRAD session. Um, Before starting, I would like to mention that कोई भी आपका question है या any query regarding UGRAD or any problem you are facing form भरने में या कुछ भी you can post it in the comments और इंशाल्लाह session के end में हम लोग Q&A session रखेंगे और वो जो भी आपका issue होगा वो resolve हो जाएगा. Okay, so today our guest is very special, Minahil Babar. Currently, she is in America. अपने UGRAD की exchange alumni हैं वो. And I'm really honored to have you as a guest, Minahil. Thank you for joining और अपने busy schedule में से आपने time निकाला. Even though अगर वहाँ पे आपका session चल रहा है, तो it must be very difficult for you. और other than that, UGRAD, she has been pursuing her bachelor's here in Pakistan in international affairs from Namal Islamabad. और इनकी co-curricular activities में जो community activities and content writing is the most prominent feature of her personality. और मैं ज़्यादा time नहीं लूँगी because everybody wants to know what the UGRAD is. So over to you, Minahil. Please हमें बताएं क्या है UGRAD. Okay, thank you so much, Samia, for such a good introduction. And Assalamu alaikum, everyone, and hope you all are doing really great. So I'm not going to introduce myself again, but I'm Minahil Barber, and today we are going to talk about the UGRAD. I would be presenting few slides, but I'm not gonna spend too much time on the slides because I want to get more questions from you people so we can cover everything. Yes. So let's move towards the slides. Okay, so my first slide says what is global UGRAD. I know everyone here in this webinar must be known what UGRAD is, but I think we should start from the very basics. So it was basically launched by the Bureau of Education and Cultural Affairs of the United States Department of State. And then it is in Pakistan, when we talk it being administered by USEFP, that is United States Education Foundation, Pakistan. And when you get selected and everything is done, then you're going to be shifted towards the IREX, which is the International Research and Exchange Board in the United States. So आपका जो next process होता है, part 2 is going to be handled by the IREX, your placement, university placement, and everything that you're going to do in United States. So the program basically offers cultural and academic exchange through a non-degree program for a semester at the university in the United States to third and fourth year student. If you are a third year student or fourth year student, you can you're going to have this opportunity. Then when we talk about the eligibility criteria, then you must be the Pakistani citizen. You must be 25 years or younger than this. Then you must be currently enrolled in a college or university and committed to returning to their home universities following the completion of the program. When you're going to be completing your one semester here, you have to go back into your country and you have to serve your country. In their 14th or 15th year of formal education, you must be the bachelor student. Then applicants are required to submit their current and most recent and old transcript with application. Transcript is the result card of your previous semesters. तो आप जिस सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे होते हो उससे पीछे जितने भी सेमेस्टर्स आपके गुजर गए हुए होते हैं उन सबका ट्रांसक्रिप्ट यू हैव टू सबमिट विद योर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर्म. So when you're not eligible for this program, so if you have a dual US Pakistani nationals, if you have the US resident here, then you have a partner or spouse in United States or वो United States का citizen हो या फिर permanent US resident हो या फिर उसका pending कोई US immigration का भी मतलब चल रहा हो काम, he gonna be an immigrant here. Then the employees and Fulbright organization के this is a Fulbright is an scholarship for the master's program. Then US State Department के कोई भी employees हों या USAID के employees हों या उनके wife or husband या उनके बच्चे हों, they are not eligible. Their fiance, siblings, dependents, and parents are not eligible for this. The student in their final years of the university, if you are in your final year and this is your if you're gonna apply, अगर आप अभी apply करोगे इस September में, you're gonna be coming here on next
अगस्त. लाइक दिस प्रोसेस टेक्स एन ईयर. सो अगर आप फाइनल ईयर में अप्लाई कर भी रहे हो तो एक साल के बाद आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप आ नहीं सकते हो. Okay, so let me talk about the application process. So advertisement basically starts in the August or September. This time, last time it was 21 September the deadline, and this time it's 27. So application form is required to be submitted online. Everything gonna be online. Supporting documents क्या हैं जिसके अंदर photocopies आपकी आ जाती है marksheets की. Then the including explanation of the grading scale. आपकी यूनिवर्सिटी जो आपको ट्रांसक्रिप्ट देगी उसके पीछे ही they're gonna be mentioning the grading scale. So वो grading scale is important because here in the United States and even in Pakistan, different universities has a different grading scale. So to make sure कि आपके marks और आपकी grades सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, they want you uh, to have a grading scale there. So they may check it out. Okay, scan copies of all our university tested transcript must be uploaded only including the most recent transcript. Then scan copies आपकी होंगी जितने भी यूनिवर्सिटी के टेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट होंगे और आपके ट्रांसक्रिप्ट आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर से ही अटेस्ट होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटीज. लाइक मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइक आई हैव टू अटेस्टेड फ्रॉम द exam branch और उसके बाद from the HOD. So it depends on your university. You should ask your university like how you're gonna be like getting it attest. Then when we talk about like how to apply, then you have to apply online for it. There's a link available on the Google. Then you have to click start the application. You have to provide your email address and make sure like you are providing the correct email address because आपका सब काम उसके बाद email पे ही होना है. Provide your CNIC, and this is the format for the CNIC, and this is exactly the format like we do follow on our Pakistani CNICs. So वो जैसा लिखा हुआ है dashes के साथ उसी तरह आपने लिख देना. Then you will receive email containing password when you're gonna be signing up for it. Like normal आप जिस भी चीज़ के लिए sign up करते हैं ये वैसे ही है. Then आप log in करते हैं. You have to read and get start the page through and go through the instructions. Okay, so I'm just gonna be talking about the journal instructions. So you have to answer all the questions on the application in English. Include your like full legal name, family name, and spelled on your passport. So yeah, here's another problem. Like people used to ask, like you don't have passport, so how are you gonna be writing your name? You can write it, but as you have it on your CNIC. सो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली यही है कि फ़र्स्ट नेम जो है वो आपका अपना नाम होता है और लास्ट नेम इज़ योर फादर्स नेम. तो आप बस उसी तरह लिखेंगे. अगर आपके पास कोई मिडिल नेम है तो देयर इज़ ऑल्सो लाइक ब्लैंक फॉर द मिडिल नेम, तो आप मिडिल नेम भी ऐड करें. लाइक आई डोंट हैव अ मिडिल नेम, लाइक आई हैव मिनाहिल बाबर. सो मिनाहिल इज़ माई फर्स्ट नेम एंड बाबर इज़ माई लास्ट नेम. सो इसके बाद what is it? Okay, include complete contact information including the index code for all the addresses, city, country codes. अब ये जो जितने भी codes हैं ये आपको मिल जाएंगे from the Google. You just have to write on the Google the code for your city. You'll be getting that, and phone and fax numbers. Then fax number, you can get your university's fax number on the Google. It's not difficult. And do not leave any spaces blank. If a question does not apply to you, enter any. Okay, yes. So बहुत सारे questions ऐसे होते हैं like they are not for you because this application is in journal. It is for everyone. So जो question आपके लिए नहीं है, you just have to write the NA into it. Like you don't need to leave any space blank. आपको सब ही fill करना है. क्योंकि अगर आप सब नहीं फिल कर रहे होगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसकी ग्रेडिंग होती है ना, लाइक 14%, 20% समथिंग, तो वो कंप्लीट नहीं होती है. All forms and supporting materials should be typed if possible and typed with the complete information. Yeah, application. Okay, so I'm sorry, it is a blurry picture because I didn't get um clear one. So this is how your application looked like. I talked about the get started and then your personal information, academic में आपके जितने भी ट्रांसक्रिप्ट हैं पिछले सब चीज़ें, additional information भी इसी तरह की कोई चीज़ें हैं. फिर personal statement is like I'm gonna talking about this. It's a 250 words like essay. Then you have to put on the documents. Okay, documents के अंदर इसके बाद additional information के अंदर I guess there's a page जहाँ पे आपको अपनी co-curricular activities का बताना होता है. ठीक है, you have 10 spaces there and you can write any 10 community services, your co-curricular activities, anything like you think like you did and it was great. You have to mention it. And आई थिंक देयर इज़ नथिंग कि हम कहें कि ये काम छोटा था. अगर आपने कहीं एक पौधा भी लगाया है एंड तो वो एक छोटा काम नहीं है. इट्स अ वेरी ग्रेट हेल्प टू द ह्यूमैनिटी, टू द वर्ल्ड, टू द अर्थ. तो आपको वो भी मेंशन करना चाहिए. Okay, now we're going to talk about the personal statement.
Personal statement word limit is 250, and then you have to provide a clear and detailed description of yourself in terms of interest in your personalities. What is your academic objectives, your goals in terms of your field of study and the personal development. Okay, so basically आप सभी अभी applications अपनी fill out कर रहे हो, तो you guys know like कि आपकी जो personal statement है उसके ऊपर 4 questions लिखे हुए होते हैं. I would suggesting you guys to make a story. Okay, आप अपना जो SOP लिखो उसको connect करो. Like your every point should be connected to each other. It's not like एक हवा में इधर जा रही है बात एक उधर जा रही है. No. अब आप अगर अपनी पर्सनालिटी इंटरेस्ट की बात कर रहे हो ना, तो आपके जो इंटरेस्ट है वो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच होनी चाहिए. आपका जो एकेडमिक ऑब्जेक्टिव है वो आपके फ्यूचर गोल्स के साथ मैच होना चाहिए. और आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स उनको हासिल करने में कैसे हेल्प करेगा ये भी रिलेटेड होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट ऑल इन वन. कि आपने अगर कोई मेजर सेलेक्ट किया, आई नो इन पाकिस्तान हम लोग यूजली बस कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये कर लिया वो कर लिया. बट ट्राई टू राइट कि आपने आपने क्यों ये चूज़ किया था. लाइक देयर आर सो मेनी फील्ड्स टू गो. लाइक मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ किया. I know like before choosing it I could have gone to the medical. मैं नहीं गई क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें था. और वो क्यों था, there's a huge reason for me to getting admission into the IR. So इसी तरह आपने भी अगर जो भी अपना सेलेक्ट किया था मेजर, आई थिंक देयर मस्ट बी अ रीज़न टू सेलेक्ट दैट. अदरवाइज और भी बहुत चीज़ें थी आप उसमें क्यों नहीं गए. अगर आपने उस वक्त सोच के नहीं किया था तो आप अभी सोचो कि लाइक बहुत सारी जो और चीज़ें हैं आप उनमें जा सकते थे, आप क्यों नहीं गए, आप इसमें क्यों आए. लाइक इंटरनली आपके अंदर आपको अंदर से किस चीज़ ने ड्रैग किया कि यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन फॉर योर मेजर्स. ठीक है. और गोल्स आपके अपनी जो आपकी जो स्टडीज़ है ना उससे रिलेटेड होने चाहिए. लाइक फ्यूचर में ये नहीं है कि लाइक यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और आप ये कह रहे हो कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है. इट्स नॉट पॉसिबल. आप गोल वो रखो जो पॉसिबल है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी IR थी एंड आई हैव टू वर्क इन टू द सिविल सर्विसेज. दिस इज पॉसिबल बिकॉज लाइक IR इज रिलेटेड टू द सिविल सर्विसेज. बट इफ आई एम गोना से ओ माई गॉड मैं IR कर रही हूँ लेकिन आई विल बी अ डॉक्टर, सो दिस इज सो लेम. सो ट्राई कि आप अपने गोल्स को, अपने फ्यूचर गोल्स को अपने इस वक्त के ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करो. और दूसरी बात, आप अपने उन फ्यूचर गोल्स को गेट करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए अभी क्या एफर्ट पुट कर रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए. लाइक व्हाट यू आर पुटिंग इन. अगर आपको फ्यूचर में ये चीज़ लेनी है, आपने फ्यूचर में वो करना है जो आप करना चाहते हो, तो हाउ यू गोना गेट दैट एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ फॉर इट. सो यस, नेक्स्ट प्लीज. Okay, so why personal statement? Like there are so many sections to um, fill in the application. So why personal statement? So basically, personal statement is to cover the aspects which are not captured elsewhere in the application, to distinguish yourself from other candidates, and to explain something different your academic require which isn't described in mark sheets, etc. So basically, I think like I don't know, people have different point of views like how they get selected. So what I think is कि personal statement is at least 70% of your application. This is what I'm not saying कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि UGRAD के सिलेक्शन क्राइटेरिया अभी भी किसी को समझ नहीं आया है. कितने बच्चे जा चुके हैं, कितने कितने कोहार्ट्स गुजर चुके हैं, बट नो वन नोज के बाद लाइक व्हाट्स देयर selection criteria. लेकिन I think like your personal statement is very much important, like because बाकी रिकॉर्ड जो मार्कशीट्स हैं सब चीज़ें लगी होती हैं उनके अंदर, उसके ऊपर जो आपके मार्क्स हैं, देयर मस्ट बी सम पीपल जो आपसे ज़्यादा अच्छे GPA वाले हों. ठीक है. सो पर्सनल स्टेटमेंट इज समथिंग जो आपको स्टैंड आउट कराती है बाकी लोगों से. बेशक आपके मार्क्स वो नहीं है, आपका CGPA 3.5 है, बट देयर इज़ अ पर्सन जिसका GPA 3.9 है, but you are standing out because of your personal statement and because you are like so clear about your vision in your life. और वो बंदा जो 3.9 CGPA लेके बैठा हुआ है, he's not that much clear about their vision in their life. They don't know what they have to do in their life. वो बस चल रहे हैं और वो बस एग्जाम्स दे के पास करके नंबर ले रहे हैं. So there's a difference between getting marks and getting the CGPA than having a clear vision of your life. So that's why the personal statement is so important. You have to work on it so much. Okay, next.
Usman, can you please change the slide? Okay, thank you. Um, mhm. Before writing the personal statement, so you have to research about the program, the scholarship you want to apply, then go through the instructions on their page and keep those in mind. Note down major points, write in outline what to include in your personal statement. Think about the people who will read your personal statement. So basically, like you guys know where's the program and where you're going to apply. You guys know, like you have gone through all the instructions in their page, and that's in your mind. Now what you have to do is you have to write the major points. Major points क्या हैं? वही चार क्वेश्चंस जो उन्होंने खुद से ऊपर दिए हुए हैं. अब आप ये करो कि आपने आउटलाइन बनानी है. ठीक है, आउटलाइन में आप लिखो कि आपके इंटरेस्ट ये हैं, आपका मेजर ये है, आपने ये मेजर क्यों चूज़ किया था, आपका फ्यूचर गोल ये है, यूनाइटेड स्टेट्स कैसे हेल्प कर सकता है. ये पांच पॉइंट आप लिखो और फिर आप उसके लिए स्टोरी क्रिएट करो. अब ये याद रखो कि आपने ये जो चार क्वेश्चंस हैं इनको हर सूरत आंसर करना है, और आंसर बहुत प्यारा करना है, ताकि वो अगले बंदे को लगे कि यार यस दिस पर्सन इज डिफरेंट. लाइक दिस टाइम आई एम नॉट श्योर, आई जस्ट फॉरगेट हाउ मेनी एप्लीकेशंस वर देयर, लाइक आई थिंक मोर देन 30,000 or I don't know. So for the fall we have 52 students. So like from 30,000, if you're getting only the 100 applications, 0.1%, like the selection rate. So you need to stand out within those applications. So you have to answer all those questions or बहुत बेहतरीन answer. And then think about the people who will read your personal statement. Then you have to look around कि कौन से लोग हैं जो, और try to get someone जहाँ पे जो मैं आपको advice दे सकती हूँ. Try to see the people who are like who have the major like you. जितने भी यू ग्रेडियंट्स हैं, लाइक जो पहले से हमारे प्रीवियस में आए हैं, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट. वो बहुत अच्छी रिव्यू कर सकते हैं. अब तो उनको बहुत टाइम हो गया है रिव्यू करते करते, तो आई नो लाइक दे आर बेस्ट इन डूइंग द पर्सनल स्टेटमेंट्स. बट अगर कोई इंसान आपके अपने मेजर का है ना, तो आपको एक आइडिया ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है कि वर्ड दे शुड इंक्लूड एंड वर्ड दे शुड नॉट. तो ट्राई करें कि अगर आपको अपने अपने मेजर का कोई मिल जाता है एलमनाई, तो उससे बात पहले करें. अगर इफ़ यू थिंक लाइक देयर इज़ नो वन, तो आप किसी से भी करवा लें. लाइक एवरीवन कैन डू इट, बट still it's better to get it from the person who has the major like you. Then again, I have explained this all. अब मैं एक दफ़ा इसको पढ़ लेती हूँ यहाँ से इंग्लिश में. It's okay, fine. Okay, what are your interests and how you're utilizing your interests and hobbies into your personal development, like your personality development, your personal development. ये मैंने आपसे पहले बात की. Then what are your academic objectives and how you're utilizing your skills for achieving it. Again, what I said, like you have to write what you are doing. ठीक है, what are your efforts, what kind of efforts you're putting to get something. What are your future goals related to your current study, like the future goal क्या है जो आप पढ़ रहे हो अभी, and how can you link skills and goals for career and personal development. Why be the scholarship or opportunity given to you, then you have to write it. Why United States, and why you want to wish to pursue your academic and personal goals in United States, and how this opportunity relates to your interest in future plans. Okay, यहाँ मैं एक बात बता दूं कि why United States, तो मोस्टली जिस तरह मैंने लिखा था. So I know like United States is a place where the civil right movements, like United States is a place which would like basically get independence to like through a civil right movements. So I just touched that point into my SOP कि मैं इसलिए यहाँ पे करना चाहती हूँ because I want to see their system, administrative system, and how the people deal with the things. Like, and I just want to compare that, like how we deal in Pakistan and how can we improve that in Pakistan to make people get their rights, which they usually don't. Okay, so this is a very important and a very happy point, like what you get from this. So you get a round trip airfare. Like if you're coming to the United States, you're going back, आपको you don't need to pay. Then your tuitions and your fees, then your housing, like within college, university, अब जहाँ भी हो आप जहाँ रहते हो. Then your meals, एक limited allowance होता है for your books. Then accident and sickness coverage, आपका medical insurance होता है, और monthly maintenance allowance भी होता है. So this is not all, but like इस scholarship के लिए you don't need to pay anything. Like this is one of the best scholarship I have ever seen in my life, to be honest. Because जब आपका pre-orientation होती है पाकिस्तान के अंदर, and you are going from your house to the
to the Marriott or Serena, जहाँ पे भी आपकी हो रही है, they do pay for you as well. आपके आने जाने के वो वहाँ के भी पैसे देते हैं आपको. If you're going for the visa interview, वो उसके भी पैसे आपको देते हैं. Then you have to appear for the TOEFL. तो TOEFL की फ़ी बहुत ज़्यादा है, like it's like above 50,000 I guess. वो भी वो पे करते हैं. You're not gonna pay that. ठीक है. वीज़ा एप्लीकेशन जो है उसकी फ़ी भी वो ही दे रहे होते हैं. फिर आपके जो रास्ते में लाइक पाकिस्तान से आप वाशिंगटन आ रहे हो, $150 वो आपको रास्ते के लिए भी देते हैं. लाइक इफ़ यू फील यू नीड टू ईट, लाइक वो यूज़ नहीं होते हैं बिकॉज यू डोंट नीड, यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द प्लेन, बट स्टिल. So it's a very best scholarship, to be honest. Okay, if you need any help, you can contact at my Gmail, and there's another Instagram account. You can reach out to me there as well. And I'm so sorry, like I'm not I have been so busy because it's been like second week of my classes starts, and the studies here are quite different the way we do in Pakistan. So I have to get used to it. और फिर मेरे पास फ़ौरन रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लोगों को रिप्लाई करूँ, बिकॉज इट फील्स सो रूड जब आप नहीं कर रहे होते हो. बट क्योंकि आई एम नॉट फ्री एट दिस टाइम, मेरी क्लासेस हैं, और समटाइम्स मेरी क्लासेस जो हैं वो रात को 9 बजे ख़त्म होती हैं. सो आई डोंट गेट टाइम, और फिर मुझे होमवर्क करना होता है, और सो मच होमवर्क, लाइक यहाँ बहुत ज़्यादा होमवर्क है. So yes, this was basically the presentation. So I just want to see the Usman. Now we have to move towards the question answers. Okay. Yeah, for sure. You can reach me out through my email or Instagram account. So I would love to help you out. No, passport. Okay, passport is not important for applying it. आप वहाँ I think passport का option होता है, तो आप कह दो कि आपके पास नहीं है. इसीलिए मैं कह रही थी कि दिस इज़ अ बेस्ट स्कॉलरशिप, बिकॉज आपको कुछ भी खुद पहले से करने की ज़रूरत नहीं है. दे विल से जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपको बताएंगे कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो. देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट. अभी आपको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, यस, नेक्स्ट प्लीज. Okay, yeah. In the certificate sections, you can add your Coursera certificates. Like you can add any kind of, like there are the five blanks to fill out the certificates. मैंने ऐसे किया था कि मेरे पास certificates ज़्यादा थे, बट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे. बट मैंने ऐसे किया था कि मैंने PDFs बनाए थे, और एक PDFs के अंदर मैंने 2-3 मर्ज कर दिए थे, और फिर मैंने वो अपलोड कर दिए थे. बिकॉज आपके पास सिर्फ 5 की जगह होती है, लेकिन अगर आप एक ही PDF के अंदर 2-3 कर रहे हो, तो वो आप 5 5 जब आप पुट इन करते हो, तो अल्टीमेटली अगर आप एक में 3 भी कर रहे हो, तो वो 15 सर्टिफिकेट्स हो जाते हैं. बट इट्स नॉट लाइक आपको 15 ही करने. यू कैन ओनली, लाइक उन्होंने 5 का कहा है तो आप 5 कर लो इफ़ यू हैव. लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि वो ज़्यादा अपलोड करो. Okay, so I think you should be pass in every exam, I think. बट मैं ये कहूँगी कि गो फॉर इट, ट्राई इट. किस्मत का पता नहीं होता है कोई. सो यू शुड ट्राई, यू शुड अप्लाई, एटलीस्ट यू शुड अप्लाई. Yes, you can add painting as your, like as your hobby, because this is hobby is not related to your studies always. Like मेरी hobby जो है, like I added cooking as my hobby because like I like cooking, so I did add that. इसके अलावा मुझे रीडिंग का शौक है, एंड इट डज नॉट मीन कि मैं एकेडमिक बुक्स ही पढ़ती हूँ. आई डू रीड अदर बुक्स एज वेल. सो वो मेरी हॉबी है. इसके बाद लोगों की प्लांट गार्डनिंग की हॉबी होती है. यू कैन ऐड वट एवर हॉबी यू हैव, एंड यू कैन जस्टिफाई, तो आप उसको ज़रूर ऐड करो. ओके, यूनिवर्सली प्लेसमेंट आई थिंक इज़ ये बहुत दूर का क्वेश्चन है, बट when you got selected for like
when you like if you're gonna be applying in the September, आपको जनवरी के अंदर you'll get a call कि you are shortlisted. फेब के अंदर आपका इंटरव्यू होगा, और मुझे फेब के like 3rd फेब को मेरा इंटरव्यू था, 16 फेब को मुझे पता चल गया था like I got the email for being selected as a principal candidate. उसके बाद मेरा टॉफिल हुआ था, ठीक है, और आई थिंक दैट टॉफिल is important for getting your placement. So उसके बाद आपके majors के according आपकी placement होती है, and I don't know what's the criteria for being like placed somewhere, लेकिन मेरा जो college है it's known very best for international relations. इसकी जो international relation का major है that is best, so मेरी placement यहाँ पे हुई है. But there are few other students जिनका IR major है and they are placed somewhere else. So I don't know, I think it's a random placement, but they try to get you somewhere जहाँ पे आपका major best है. So, yes. Okay. So, the answer is don't copy anyone. आपकी पर्सनालिटी, हर इंसान यूनिक है. आई बिलीव दिस. क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको मुख्तलिफ नेचर के साथ पैदा की है, इसका मतलब है कि आप यूनिक हो. आपके फ्रेंड्स भी हैं, आप आसपास अपने लोगों के साथ देखो, यू हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी, और आपकी पर्सनालिटी दूसरे लोगों से मैच नहीं करती है नॉर्मली, ठीक है. तो इसका मतलब है कि यू आर यूनिक इन योर ओन वे. तो बस कॉपी मत करो. आई डू सजेस्ट कि आप लोग सैम्पल्स देखो SOPs के, लाइक हाउ टू राइट इट एंड व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट. SOPs के सैम्पल्स ज़रूर देखो, बट मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि वो दूसरे के आइडियाज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. डोंट ट्राई टू डू दिस, बिकॉज आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो ऑलरेडी. यू हैव टू गेट दैट आउट ऑफ योर सेल्फ. आपको सोचना है. आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जब आई थिंक मैं एप्लीकेशन अपनी फिल आउट करी थी, तो लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, सो मोस्टली ऐसा होता है कि वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि what आर द गुड हैबिट्स इन यू एंड what आर द बैड हैबिट्स. So I was so dumb for this question. I was like blank totally, कि मुझे ये नहीं पता कि मेरी अच्छी और बुरी आदतें कौन सी हैं, ठीक है. समटाइम्स आप अपने बारे में इतने ब्लैंक हो जाते हो, एंड राइटिंग SOP आप इतने अपने आप को प्रेशराइज करते हो कि आप खुद ही थोड़े से अपने आप के बारे में ब्लैंक हो जाते हो, लाइक यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ. सो ऐसा करना है कि अपने आप को टाइम दो, बैठो और सोचो, लाइक हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल एंड व्हाई यू वांट टू गेट इन योर लाइफ. अपने आप को टाइम दें, अपने बारे में सोचें, बिकॉज मोस्टली वी गेट इंडल्ज इनटू द वर्ल्ड दिस मच कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं. सो यस, आई होप कि मैं आंसर कर पा रही हूँ. ओके, यू पार्टिसिपेटेड इन द एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन? Yes, you can add it into the non-academic, because this is not part of your major or your subjects. Taking part in any kind of essay, speeches, hosting, ये जितना भी stuff है, ये सब के सब जो है वो नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है, स्पोर्ट्स, ये सब कुछ. Okay, so yeah, I really want to review the SOPs, और मुझे बहुत लोगों ने SOPs भेजी हुई हैं. मैंने कुछ लोगों की रिव्यू की भी हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरा टाइम डिफरेंस आप लोगों से 9 आवर्स का है. जब वहाँ सुबह होती है तो मेरी रात, और जब यहाँ रात तो वहाँ सुबह. इसका भी बहुत प्रॉब्लम है. दूसरा, मैंने आपको बताया है कि आई एम सो मच बिजी इन माई स्टडीज़, और स्टडीज़ के साथ साथ यहाँ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड वी हैव टू टेक पार्ट इन दोज एज वेल. सो मेरे से आपको आंसर्स बहुत डिलेड मिलेंगे, सो ये मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी के साथ करूँ. सो बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, लाइक जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो डेफिनेटली आई वुड बी देयर फॉर एवरीवन, बिकॉज यहाँ लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है एज कम्पेयर टू इन पाकिस्तान. I didn't get you, as nowhere it is mentioned that the student should have some kind of marks. I think no, you're not required to have some like specific marks. आपका अच्छा होना चाहिए. आई बिलीव आपका GPA अच्छा होना चाहिए, बट ये कहीं मेंशन नहीं है कि आपका इतना ही होना चाहिए. और मैंने सुना है कि ऐसे भी लोग हैं जिनका 3 भी GPA नहीं था, दे गॉट सिलेक्टेड. सो
it's fine, people don't. Like I have seen people who got selected लेकिन उन्होंने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया था. I think adding the certificates and adding the activities you have done other than your studies may give some percent some weightage to your application. लेकिन इसका ये नहीं है कि अगर आप अपलोड नहीं कर रहे हो, your SOP is really best, तो आप on the basis of not uploading any certificate आप reject हो जाओगे. ऐसा नहीं होगा. So अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो try to invest yourself into writing your SOP. Your SOP should be like perfect. Okay, so you're doing IR, so it depends upon your future goals, like what you want to do in the life, and where you want to look yourself after your graduations. So मेरा personal experience में मतलब मैंने IR इसलिए select किया था because I have to appear into the competitive exam CSS. So I want to work in the civil services of Pakistan, and why I want to work, because I just want to be I just want to help people to get the justice and to get the equal rights as to the people who are deprived from something, like they're deprived regarding their money, they are deprived for being having a good family structure or a kind of stuff. So I basically added this goal into my SOP because यही मेरा goal है for doing this IR. Okay, because मैंने apply किया था when I was in my fourth semester, I guess, and yeah. तो मैंने कोई भी internship, मैंने सिर्फ एक internship की हुई थी, and that was basically writing articles, और मेरे 10 articles published हुए थे. So this was my internship. इसके अलावा मैंने कोई भी internship जो है वो नहीं की थी. Like I have to do the internships, लेकिन like I was planning to do that after my fifth semester. लेकिन fifth के बाद में यहाँ आ गई. अभी मुझे summer में करनी थी, लेकिन I was busy for coming here and to complete all the requirements. तो फिर मैंने नहीं की. So I don't know like it gonna be affected because आप अपने third semester में या fourth semester में apply कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने practical experience लिया हो या internship की हो. It's fine. Okay. Are we done with the questions? Okay. Okay, this is a very good question. So my personal experience is so good, because like from applying for the scholarship and getting here, it was it was a very depressive time because आपको आपको बहुत कुछ करना पड़ता है. Like जब मैंने अप्लाई किया था अगस्त के अंदर, उसके बाद मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने इसके लिए अप्लाई भी किया था, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और फिर ये आपको डिप्रेशन भी बहुत देता है. मुझे जब कॉल आई थी कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड, दैट वाज ऑन जनवरी 10 और मेरे फाइनल्स हो रहे थे. सो जनवरी 10 के बाद मेरा Feb 3 को इंटरव्यू था, तो वो सारा टाइम जो था वो बहुत ही बुरा गुजरा मेरा, बिकॉज आई वाज लाइक क्योंकि इंटरव्यूज श्योर इज द लास्ट थिंग, और इंटरव्यूज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लोग इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा लाइक आउट होते जाते हैं. सो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना और ये सब कुछ वो बहुत लाइक इट्स नॉट टफ मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन खुद फिल आउट किया, अपनी SOP खुद लिखी है, तो यू आर गुड टू गो. लाइक आप आंसर्स कर सकते हो हर चीज़ के. लेकिन वो थोड़ा सा आपको होता है कि पता नहीं क्या होगा, तो वो एक बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट था. लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है ना, तो दैट्स द हैप्पीएस्ट. आई गॉट सेलेक्टेड, इट वाज माय बर्थडे बेसिकली. इट वाज 16 Feb एंड इट वाज माय बर्थडे, एंड आई जस्ट सेलिब्रेटेड माय बर्थडे इन द आफ्टरनून, और फिर इवनिंग में मुझे जो है वो ईमेल आई थी. तो इट वाज द बेस्ट डे फॉर मी. उसके बाद का प्रोसेस सब बहुत हेक्टिक होता है, लेकिन आपको बहुत खुशी होती है कि यू आर गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, एंड आई थिंक लाइक इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी पर्सन. इट्स नॉट फॉर जस्ट फॉर मी और जस्ट फॉर फ्यू पीपल, बट हर किसी को
everyone want to travel and to see and to feel the different culture. So यहाँ पे आके मुझे मेरा experience अभी तक बहुत अच्छा है. People are so caring, they are so helpful here, they are so welcoming. Culture shock आपको थोड़ा सा लगता है यहाँ आके, because here the things are totally different as we have in Pakistan. लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं. आप बहुत जो जो मैं इनके बारे में कहूँगी वो ये है कि दे आर टू डाउन टू अर्थ, दे आर टू डाउन टू अर्थ. लाइक हम पाकिस्तान में हम बहुत एरोगेंट और रूड हैं. लाइक पर्सनली अगर मैं भी कहूँ तो हर इंसान के अंदर ये चीज़ है, बिकॉज मे बी हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है और हमारा सिस्टम ऐसा है, लेकिन वी आर लेकिन यहाँ लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा. और स्टडीज़ इज़ क्वाइट डिफरेंट हियर एज़ कम्पेयर्ड इन पाकिस्तान. लाइक वी हैव टू स्टडी टू मच हियर. हमें होमवर्क बहुत ज़्यादा मिलता है. क्लास में टीचर्स लाइक दे डू टीच, लेकिन वो उस तरह प्रॉपरली नहीं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर टीचर्स पढ़ाते हैं प्रॉपर. यहाँ पे पढ़ाते नहीं हैं, जस्ट लाइक देयर टू आपकी क्यूरीज सॉल्व करना. बट लाइक प्रोफेसर्स आर सो गुड हियर, दे आर सो काइंड एंड दे डू अप्रिशिएट यू. लाइक वो आपको हर छोटी चीज़ के लिए भी अप्रिशिएट करते हैं. सो दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस प्लेसेस, कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अप्रिशिएट किया जाता है. आई एम टेकिंग अ पियानो क्लास, or that is the most favorite, because बाकी सब तो मेरी academic, like this is an elective course for me. बाकी सब तो मेरी academia के related हैं, तो वो ज़रा टफ है यहाँ पे as compared to when I was in Pakistan. तो लेकिन piano is a class like जो बहुत ही अच्छी है और सूदिंग है. तो वो मैं सीख रही हूँ. आई नेवर प्लेड पियानो बिफोर, बट यहाँ पे आके मैंने फर्स्ट टाइम उसको प्ले करना लाइक थोड़ा बहुत लाइक मैं अब सीख रही हूँ प्रोफेसर से. एंड ही इज़ सो नाइस कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हियर पीपल आर सो नाइस. वो मुझे ऐसे हर रोज़ बूस्ट अप करते हैं कि नो यू आर डूइंग बेस्ट, ओ माय गॉड आपने ये भी सीख लिया, आपने ये भी सीख लिया, आपने ये भी सीख लिया. तो मुझे होता है कि वाओ, लाइक वाकई मैंने, इवन आई नो कि मैं उस तरह से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपको हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं. So it's a very it's a very good time here. Yeah, you can. You should justify a thing. I think you should justify. If you can justify it, you should go for it. And then while the interview, you have to answer that as well. So जब interview में अगर आपसे वो पूछेंगे, तो you should be aware कि आपने SOP के अंदर इसको कैसे justify किया था, आप उसको वैसे ही justify करना interview के अंदर भी. That's the best. Go for it. Okay, yeah, you can go for the education or psychology. People do like this कि मेरे ही साथ एक लड़की हैं और वो बायोटेक्नोलॉजी की हैं, बट हियर यूनाइटेड स्टेट्स शी इज टेकिंग आईआर बिकॉज शी वाज एबल टू कनेक्ट व्हाई शी गोना लाइक. अब जो भी, सिर्फ ये याद रखो कि आप जो भी यहाँ पढ़ना चाह रहे हो, यू कैन चेंज योर फील्ड. लेकिन आप ये याद रखो कि आप जो भी पढ़ना चाह रहे हो, आप उसको जस्टिफाई कर सको कि आप ये क्यों करना चाह रहे हो, और आप उसको उसको अपने फ्यूचर गोल्स के साथ रिलेट कर सको. Library is closed. Yeah, it is Labor Day, so they closed it. No worries. You can sit here, by the way, and there as well. So, so आप अगर उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो कि आप क्यों यूनाइटेड स्टेट्स में जाके ये करना चाहते हो और ये आपको कैसे हेल्प करेगा, तो ये गो फॉर इट. यू कैन, लाइक इफ यू वांट टू बी द प्रोफेसर, लाइक एजुकेशन इज बेस्ट और साइकोलॉजी इज आल्सो बेस्ट. So yeah. Okay. Okay. So interview is, I think interview is quite easy as compared to filling out the application and writing the SOP, because अगर आपने खुद अपनी SOP लिखी है, तो your interview is all about the SOP. मोस्टली मतलब मेरे से तो उन्होंने SOP से ही क्वेश्चन पूछे थे कि आपने ये लिखा है तो आपने क्यों लिखा है, आपने ये लिखा है तो आप इसको कैसे ऐसे करोगे. देन कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी होते हैं, लाइक जो जर्नल क्वेश्चंस हैं, और वो जर्नल क्वेश्चंस बिफोर योर इंटरव्यू आपको हर जगह से मिल रहे होंगे कि अच्छा ये क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं आपसे. सो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट पुट योर ऑल एफर्ट्स राइट नाउ इनटू योर एप्लीकेशंस. You should not be hopeless. You should write. You have time. Like it's for September, and you have time for like till 27. आज से ही लिखना शुरू करो SOP. जो अपनी
पुरानी SOP है उसको सामने रखो और देखो कि इस टाइम के अंदर आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, आपने चीज़ों को कैसे बेहतर किया है, फिर आप उस SOP को कैसे बेहतर, लेकिन आपके पास एक चीज़ अगर एक एक सामने आपके पास एक चीज़ लिखी हुई है तो आप उसको बेहतर कर सकते हो ज़्यादा अच्छे तरीके से एज कम्पेयर टू लाइक आपके पास कुछ भी नहीं हो माइंड में. Yeah, you have done an internship, so go for it. You should like upload the certificate as well. आप उसको mention भी कर सकते हो अपनी SOP में if you want. Okay, so that's great if you have a like. I think there's a portion where you have to mention if you're having any kind of a scholarship. Maybe it's only from the United States or somewhere else. I don't remember. I'm sorry. लेकिन मैं आपको भी यही कहूँगी जो मैंने उनको कहा कि अपनी SOP सामने रखो पुरानी वाली जो आपकी लास्ट SOP थी और आप उसको पढ़ो. इट्स बीन अ ईयर तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपकी उसके अंदर क्या मिस्टेक्स थी और आप उनको कैसे बेहतर कर सकते हो. लाइक एक साल के अंदर आपके अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस आए जो आप उसमें मेंशन कर सकते हो. एंड प्लस read the sample SOPs. I think that would be helpful. Okay, so SOP ka वाकई it's really difficult to write everything into 50 words, but you have to do it. और आप ऐसे कर सकते हो कि स्किम करो अपने अपने सेंटेंसेस को. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपने सेंटेंसेस कैसे स्किम किया था. Like if for example you are writing like you're mentioning some time, some dates, years. So if you're writing I was 7 years old, so you can only write I was 7 years old को आप काट दो, 2 लफ्ज आपके कम हो गए. तो आई थिंक देयर आर सम सॉफ्टवेयर एज वेल जहाँ पे वो आपके आपके पैराग्राफ्स को स्किम कर देते हैं. तो ट्राई दैट आउट एज वेल. लाइक अगर आपको कोई मिल जाता है ना तो आप सेंटेंसेस को छोटा करो. अननेसेसरी जो आपको फील हो रहा है कि ये नहीं डालना चाहिए वो निकाल लो. Objectives is basically like is related to your major, like whatever the major you are pursuing आपके क्या objectives and like what you want to get from that. अब वो आपने वो major choose किया था तो क्यों किया था, आपके क्या objectives से, आप क्या चाहते हो, आप क्या सीखना चाहते हो उससे. And how those objectives like जो आप सीखोगे this is basically आप like for example मैं IR में थी तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि मुझे आईआर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और स्पेसिफिकली जो सब्जेक्ट्स मुझे सीएसएस में हेल्प देंगे मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए. ठीक है, एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि मैं जब सीएसएस के लिए प्रिपेयर करूँ तो मुझे कोई मसला ना हो. बेसिक कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई. ये मेरे ऑब्जेक्टिव था गेटिंग लाइक आईआर. सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर मेजर कि बेसिकली आप सीखना क्या चाह रहे हो अपने मेजर से. सो नॉर्मली पहले मैंने सुना था कि लाइक 250 अराउंड होते हैं, लेकिन हमारे टाइम इट्स 100 आई गेस 155. या हाँ 155. 52 इज़ फॉर द 51 इज़ फॉर द फॉल सेमेस्टर और बाकी सब स्प्रिंग के लिए हैं. एंड इट इंक्लूड्स द alternate and the principal candidates, like overall 155. Thank you. uh, ओके, सो बेसिकली इट्स नॉट रिटन एनीवेयर कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उन पॉइंट्स को आंसर मतलब बिल्कुल लाइक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है. बट आई थिंक लाइक आपको प्रॉपर सीक्वेंस में ही लिखना चाहिए बिकॉज जिस तरह उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं ना दैट कैन मेक योर SOP अ वेरी गुड स्टोरी. ठीक है, मतलब पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता रहे हो कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट यू डिड इन द पास्ट. फिर आप बता रहे हो कि आपके
आपके मेजर्स लाइक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अपने मेजर्स के लिए, फिर आप बता रहे हो कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, फिर आप बता रहे हो कि यूनाइटेड स्टेट्स आपको उन गोल्स को हासिल करने के लिए कैसे हेल्प करेगा इफ़ यू गोना बी स्टडिंग देयर फॉर अ सेमेस्टर. सो आप खुद ही सोचो तो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, यू नो, वेरी गुड मेन पॉइंट्स आउटलाइन फॉर गेटिंग अ गुड स्टोरी. तो अगर उसमें लिखोगे तो आई थिंक इट वुड बी अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू इफ यू गोना राइट like without some, like if you have some other sequence जो आपको लगता है कि that's more better than this, तो आप go for that. But you cannot apply, Manur. You're in seventh, you are in the last semester, like you are in your last year. अभी आप अब सेवेंथ में हो, तो आपका सेवेंथ कंप्लीट हो जाएगा जनवरी में, और एट्थ आपका ख़त्म हो जाएगा लाइक अगेन इन स्प्रिंग. यहाँ पे आपने अगस्त में आना है, तो आपकी डिग्री कंप्लीट होगी भी होगी. Okay, Vania, this is what I've been talking about from the start. Objective and goals are different. Objective is what you want to learn from that, and goal is what you want to get in the future. ठीक है. आप अपने एकेडमिक जो आपके मेजर्स हैं उनसे क्या सीखोगे, एंड देन आप उनको कैसे अप्लाई करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में और अपने गोल्स हासिल करोगे फ्यूचर के अंदर. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ. ओके. Is there any other question? No, it's not important. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. लाइक अगर आप यहाँ एक सेमेस्टर के लिए कोई और भी फील्ड चूज़ कर रहे हो और आपको लगता है कि ये फील्ड आपका जो भी फ्यूचर गोल है, ठीक है, आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हो, ये एक सेमेस्टर की स्टडीज़ हेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स गोना हेल्प यू टू गेट दैट गोल. आप जा सकते हो. मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड आईआर आर क्वाइट are so different from each other, the both of them. लेकिन I don't know what she write in her SOP, लेकिन उसने इसको justify किया होगा कि अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स में आके एक सेमेस्टर आईआर पढ़ रही है तो वो आईआर उसको कैसे हेल्प करेगा उसका जो भी फ्यूचर गोल है. दैट मस्ट लाइक इट कुड बी रिलेटेड टू हर बायोटेक्नोलॉजी या जो भी वो करना चाहती है. आई डोंट नो. सो यही है. इट्स नॉट मैंडेटरी. ले सकते हैं अगर आप आपको लगता है कि मैथ्स कॉम आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर गोल्स में, जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, यू आर गुड टू गो फॉर इट, यू कैन से. I don't know, I'm not getting you, I'm sorry, but if you're writing, if you're sure like you have write it by yourself, आपने खुद लिखा है, सब चीज़ें like सब points आपके अपने हैं, then don't there's no need to get worried if like it's 100% plagiarized or something. But I'm not sure about this. I think if Usman can answer this in the end, so I would be really thankful to him. Okay. Okay. Yes. So there are the two addresses. Like आपके दो address होते हैं. One is your permanent address and one is your temporary one. So मेरा जो ID card है, on that my both of the addresses are of my hometown. ठीक है, लेकिन I live in Rawalpindi. सो मैंने बेसिकली जो परमानेंट एड्रेस था वो मैंने वहाँ का मेंशन किया था, और जो मैंने टेम्परेरी था वो यहाँ का किया था. बिकॉज इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड, आपको कुछ ये जो सिलेक्शन लेटर जो चीज़ें हैं उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको वो लोग मेल करते हैं, ठीक है, टीसीएस करते हैं. तो आपका वही एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप वो चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हो. सो अगर आप दोनों एड्रेस वो लिखना चाह रहे हो जहाँ आप अभी रह रहे हो, आप वो भी कर सकते हो. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन टू इट. लाइक इट्स योर, लाइक ये नहीं है कि सीएनएसी पे जो है आपने वही लिखना. नो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन योर एड्रेस एंड यू थिंक दैट दैट्स फिजिबल फॉर यू शुड गो फॉर दैट एज कम्पेयर टू क्या आप वो लिख रहे हो जो आप कैसे भी सीएनएसी पे.
आई थिंक मैथ्स लाइक एवरी मेजर स्टूडेंट कैन अप्लाई. अच्छा हाँ, ये आप देख लो कि सिर्फ मैथ्स नहीं वहाँ लिखा होगा. आई थिंक लाइक टू से ओके, मैथ्स के अंदर भी डिफरेंट होते हैं, लाइक डबल मेजर मैथ्स और कुछ इस तरह के ना, इस तरह के नाम होते हैं फॉर द कोर्सेज. तो आपका अगर एग्जैक्टली exactly वहाँ पे नहीं है तो आप वो सेलेक्ट करोगे जो आपका नियर बाय होगा. लाइक फॉर एग्जांपल जो लोग पीस स्टडीज़ कर रहे हैं, वैसे यहाँ पीस स्टडीज़ है, लेकिन फॉर एग्जांपल जो लोग पीस स्टडीज़ कर रहे हैं और वो लिस्ट में पीस स्टडीज़ शो नहीं हो रहा, तो वो लोग आई आर सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब जो लोग एक और भी एक सब्जेक्ट है, व्हाट्स कॉल्ड, माय गॉड जस्ट फॉरगेट, देयर इज ऑल्सो एन सब्जेक्ट दैट्स लाइक क्वाइट सिमिलर टू आई आर, तो वो बेसिकली वहाँ पे यहाँ पे ऑफर नहीं हो रहा होता है, तो लोग आई आर सेलेक्ट करते हैं. सो आपका जो भी क्वाइट सिमिलर है आप ढूंढो लिस्ट के अंदर और आप वो सेलेक्ट करो. 1 semester. It's a one semester non-degree program. Yes, you can. You can like add into your SOP. But I would suggest कि मैंने अपने volunteer work को add नहीं किया था अपनी SOP के अंदर, because मेरा जो like आपके पास एक proper section है, आपके पास like you have 10 different categories, आपके पास 10 places हैं जहाँ पे आप अपना volunteer work add on कर सकते हो. So अगर आप SOP में भी करना चाह रहे हो, लोग करते हैं, you can go for that. It's totally all right. But if you have something more good about yourself, about your goals, about your studies, about anything, and I would suggest go for that in your SOP as compared to writing the volunteer work. और volunteer work ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप उन भी 10 like I don't remember कि उसको क्या additional जो information है उसके अंदर वो 10 blanks हैं और वो आपको fill out करनी होती हैं for your any co-curricular activities. तो उसके अंदर आप अपना जो वॉलंटियर वर्क है जिसके सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं है, आप वो भी ऐड करो. सब ऑर्गेनाइजेशन या सब चीज़ें आपको सर्टिफिकेट्स नहीं देती हैं. मैंने बहुत सारे वो चीज़ें ऐड की थी जिनके सर्टिफिकेट्स नहीं थे, क्योंकि हर चीज़ के लिए लाइक जो इनिशिएटिव आप खुद भी ले रहे हो ना, आप अकेले भी कोई अच्छा काम कर रहे हो, यू आर लाइक पुटिंग समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटीज़ इन द वर्ल्ड, सो इन योर कंट्री. सो आप खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो, बट यू हैव टू मेंशन दैट. सो मेंशन वट एवर यू हैव डन. छोटी बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है. इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड तो वो छोटा बड़ा नहीं होता है. एट दैट सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है आपके पास हर चीज़ के हों. ठीक है, थैंक यू सो मच. मिनाहिल अभी जो हैं वो सामने भी एंड करेंगे, बट अगेन द थिंग वाज प्लेजरिज्म की, तो या देयर इज़ नो नीड ऑफ चेकिंग थ्रू द वेबसाइट्स ना. उसकी रीज़न ये है कि जो भी आपको अनपेड वेबसाइट्स मिलेंगी दे आर नॉट ऑथेंटिक, वाली तो बात है. ठीक है, इफ अगर फिर भी आपको लाइक वो होता है ना, थोड़ी सी भी इंसान के अंदर रह जाती है ना, इंसान कहता है कि नहीं यार मुझे तो बस चेक करके रहना कि मेरी प्लेजरिज्म जो है वो कितने परसेंट है एंड ऑल दैट स्टफ. अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं देन गो फॉर द टर्न इट इन. ठीक है, टर्न इट इन इज़ अ गुड वेबसाइट फॉर चेकिंग द प्लेजरिज्म. अदरवाइज उसके अलावा जो भी गूगल पे मिलेगा सब बकवास करेंगे. कोई अगर आपको 100% दिखा रहा है ना आपकी यूनिक है, वो 100% यूनिक नहीं होगी. ठीक है, जस्ट टर्न इट इन एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड चेक करते हैं जो भी आप लोग चीज़ें कर रहे हो. तो ठीक है, तो उसी से करें. एंड अगेन एक और क्वेश्चन था मैथ्स के रिलेटेड, तो देन सेलेक्ट एक वहाँ पे है साइंसेज एंड देन उसके आगे है मैथ्स. मैथमेटिक्स आई थिंक या स्टैटिस्टिक्स है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. एंड Okay, thank you so much everyone. It was really nice. And I hope कि I tried my best कि मैं answer कर सकूँ आपके questions के और चीज़ें cover कर सकूँ. But still I think it's there would be something जो कि answer नहीं हुआ होगा या आपको satisfied answers नहीं मिले होंगे. But you guys can email me. You can get my email, so I'll try my best to answer. But I think it's my very first time. I just got selected like in this session, or ये मेरा पहला time like I'm doing the webinars related to this, or I'm reviewing the SOPs. So when you are like when it will be like
आई हैव डूइंग इट रेगुलरली, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और समझ भी आ जाती हैं. But I tried my best, and yes, you should apply, Aisha. I just saw your. Yes, you should. If you don't have volunteer work, still you have to apply. You don't need to worry कि सब कुछ volunteer work नहीं है. Education is way too above from everything, so you should go for it. And thank you so much everyone for joining, and I hope you would be enjoying completing your Thank you. application. And it was really nice talking to you all, and thank you so much, Usman, for having me for this great webinar. We'll see you guys soon, inshallah. Allah Thank you Hafiz. so much, Minahil, for joining in. We had a really great time और आपने माशाल्लाह से सारे ही questions को बहुत अच्छे से address कर दिया. I hope सबकी जो भी queries हैं वो clear हो गई होंगी. Thank you so much, and it's really sweet of you to join after having such a busy schedule. We appreciate your efforts a lot. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much for having me. Have a good day. Night. Sorry.